ये तस्वीरें आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे 2023 को संसद में पेश किया गया। जिन बातों का जिक्र वित्त मंत्री ने किया उसे ही अब उसका अवलोकन किया जा रहा है एक बुक के जरिए, जिससे ओवर टू मिस्टर नागेश्वर प्लीज। नो यू कैन। यहां आपको बता दें कि जो सीए के डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे का जो है इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस ये यहाँ शुरू हुआ है। So we just spent 1 month of 2023, so you still have 11 more months to go. So I wish you all a very happy and healthy rest of 2023. This morning, we had the International Monetary Fund release its World Economic Outlook update. And they maintained India's GDP forecast or estimate for current financial year at 6.8, next financial year at 6.1, and importantly, for 24-25, they kept India's real GDP growth forecast at 6.8%. So they show an acceleration of India's GDP after a slight dip which they estimate for the next financial year. In fact, the presentation today is going to focus on this aspect, that India's GDP growth is poised to do better in the remainder of this decade, and that is the focus of this economic survey itself. Okay. Moving. यार आपको वहाँ रहने चाहिए ना, इसको वहाँ बैठ गए Closing. Okay. सर हो गया यहाँ से भी। Okay. We basically let you admire the cover slide for a bit longer than it needed to be. So, what are the key messages, as I mentioned in the initial remarks? Why is the economic growth going to perform better this decade, remainder of the decade? And what the reforms of the last 8 years have done to make sure that happens? And beyond 2030, what will be India's medium-term growth magnets? And finally, as we look ahead to 2047, what else and what more we could do to realize India's full potential in the Amrit Kaal? And if you look at the, is it moving properly on the screens? Okay, thank you. The survey looks ahead to the medium term because the pandemic response and recovery phase is over. In fact, chapter 1, the title itself says, State of the Economy, Recovery Complete. And therefore, after a long time, we have banking, non-banking and corporate sectors with healthy balance sheets, and they are ready to borrow and lend and invest. So we don't have to speak about pandemic recovery anymore. We have to look ahead to the next phase of India's economic growth process.
So why is economic growth going to be better this decade? In order to look ahead to the future, we always have to first look back at the rearview mirror. Let's rewind the tape a little bit. What happened in the first decade of the millennium was a lot of optimism about BRICS economies. By 2002, balance sheets were lean and mean. Companies were willing to borrow, invest, banks were willing to lend. So leverage ratio in the corporate sector and in the overall non-financial private sector rose very sharply in the first decade. And it got to the point where the credit to GDP ratio in actual terms was much higher than the trend in the first decade of the millennium. That is what you see. The middle hump is basically actual credit GDP ratio was well above trend, and it persisted for a long time. And because it was quite well above trend, and also actual credit GDP ratio was well in excess lending, and the second decade was a payback time. So India went through a classic financial cycle, credit boom and credit bust. And this is not something new for the world. Every time you go through a financial boom and bust, it does leave its impact on economic growth, and that is what happened to us, especially in the second half of last decade. And you can see this here. Look at this chart. From 1980 to 2000, the bank credit to GDP ratio was roughly around between 25 and 30%. And then it jumped from 25 to 55, 60%. And spend the second decade of this millennium hovering in that range. This is the digestion process. So there was massive expansion. Remember, this is a ratio. GDP went up, but the bank credit expanded even more than GDP growth, and naturally, such a big spike within a space of 10 years, what we could not achieve in the previous 20 years, naturally had to lead to some kind of a credit indigestion problem, which had to be adjusted in the second decade. And now, that process of indigestion that has been sorted out, and the balance sheets are repaired now, and banks' non-performing ratio, whether it is scheduled commercial banks in general or public sector banks, they are lower now. And you can see that also banks have done so partly through recapitalization, raising fresh equity, and also through higher provisioning. So bank balance sheets are repaired, and that is why you see that in the credit growth picking up. You look at credit growth across sectors, agriculture, industry, services and personal sectors, housing loans and car loans, etc. The growth rate is now sustainably above double digits. And this is a sign that this is what we were missing towards the second half of last decade because of balance sheet issues. So to quickly summarize exactly what happened was 2005 to 12 credit boom that led to balance sheet stress later, phase of a higher non-performing assets due to past forbearance, and then by the time we could repair, just want to leave one statistic with you. The non-financial private sector leverage ratio, debt to GDP, went up by 40 percentage points in the first decade, from 2000 to 2010. And from 2010 to 2018, it came down by 30 percentage points. And by 2018, that was kind of done, it had bottomed out. But before we could start expecting corporates to borrow and banks to lend, came the collapse of IL&FS and some housing finance companies. And by the time we got a grip on that problem, came the pandemic. That lasted 2 years. And then 2022, we had the commodity price shock and synchronized monetary policy tightening after a very long time in the developed world. So it's a case of balance sheet stress followed by successive one-off exogenous or external shocks that have basically prevented the impact of economic reforms pursued by the government on economic growth. We would have seen the results already, but for these successive one-off shocks on the back of a fairly large credit boom that turned into a bust. The reforms of the last 8 years, which I just now mentioned to you, basically spans multiple dimensions. It is not purely about economic reforms for higher growth. It is also about inclusive growth, financial inclusion, banking cleanup, the creation of the digital public infrastructure, which I think I'm going to talk about a bit later as well, and contribution to healthy India, ease of living, and continuing on to the next slide,
physical infrastructure creation, facilitating investments, transparent taxes and tax administration, ease of doing business, and farmers' welfare. So broadly speaking, about 10 areas we have covered here. These reforms were happening even as the banking cleanup was going on. And this episode between 2014 and 2022 has a lot of parallel to what happened between 98 and 2002 as well. Then, as now, the banking system was coming out of an NPA crisis, and there were sanctions on India after the nuclear device was tested in Pokhran in 98, and deleveraging was getting on in the banking and corporate sector. There were 2 successive droughts. The technology boom ended, internet boom ended in 1999-2000, and the US recession followed. 9/11 happened. But amidst all these shocks, interest rates were deregulated, privatization was pursued vigorously, and the first foundations of the insolvency and bankruptcy regime was laid with the asset recovery mechanisms. The FRBM Act was introduced, and today's digital infrastructure, which we talk about, the foundation for that was laid with telecom reforms in that era. But obviously, there is a lagged effect for these reforms to show through in the data because underlying conditions had to turn favorable. थोड़ी देर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे 2023 पेश कर दिया। इसमें साल 2023-24 में 6.5% विकास का अनुमान जताया गया है। मौजूदा वित्त वर्ष में ये 7% है। 2021-22 में विकास दर 8.7% थी। सर्वे के मुताबिक कोरोना महामारी में हुए नुकसान से अर्थव्यवस्था उबर गई है। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। आज अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के लिए अगले 25 साल बहुत महत्वपूर्ण है। ये अब विकसित होने की राह पर बढ़ रहा है। ये सरकार स्थिर, निडर और निर्णय लेने वाली सरकार है। बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज ही देश की अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक संदेश आया है। आगे उन्होंने कहा कि संसद में तकरार के साथ तकरीर भी होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने फिर से नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। कुशवाहा ने कहा कि मैं संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष रहा, लेकिन मेरे पास अधिकार नहीं रहे, मुझसे कोई राय नहीं ली जाती और मैं अगर सुझाव देता था तो मेरे सुझावों पर ध्यान नहीं दिया जाता था। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वालों पर निशाना साधा। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद करते हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है या बीबीसी। दिल्ली सरकार ने एलजी को प्रस्ताव देते हुए कहा कि 3, 4 या 5 फरवरी को मेयर चुनाव के लिए एमसीडी सदन में बुलाया जाए। एमसीडी ने 10 फरवरी का प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक शख्स ने जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने एक शख्स की पहचान कर ली है। पुलिस के मुताबिक इस व्यक्ति की मानसिक हालत ठीक नहीं है। क्योंकि इस व्यक्ति की मानसिक हालत ठीक नहीं, इसलिए इसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। झारखंड के राज्यपाल ने विधानसभा से पारित 1932 के खतियान को लागू करने का बिल लौटा दिया है। अखबारों में छपी इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में वही होगा जो चुनी हुई सरकार चाहती है, वो नहीं जो गवर्नर चाहते हैं। प्रधानमंत्री 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोना दौसा खंड का उद्घाटन करेंगे। एक्सप्रेसवे दिल्ली और जयपुर के बीच यात्रा को 2 घंटे कम कर देगा। ये 8 लेन का एक्सप्रेसवे है जो 12 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। आजादी के 75 साल बाद तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई में दलित समाज के लोगों को एक मंदिर में जाने दिया गया। कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच जिला के आला अधिकारियों की मौजूदगी में अनुसूचित जाति के लोगों ने मंदिर में पूजा अर्चना की।
हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में लगातार बर्फबारी से परेशानी बढ़ गई है। शिमला के नारकंडा, कुफरी और खड़ा पत्थर में देर रात से बर्फबारी हो रही है। ऐसे में इसके आसपास की कई सड़कों पर आवाजाही ठप हो गई है। बर्फबारी के कारण शिमला के कुछ ग्रामीण इलाकों में बिजली भी गुल है। शिमला पुलिस ने सैलानियों और स्थानीय लोगों के लिए यात्रा संबंधित एडवाइजरी जारी की है और फिसलन और बाधित सड़कों पर यात्रा न करने की सलाह दी है। प्रदेश के 3 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 476 सड़कें भी बंद रहेंगी। कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से कल पूरे दिन कश्मीर का संपर्क देश के दूसरे हिस्सों से कटा रहा और कल कोई भी विमान श्रीनगर एयरपोर्ट से ना तो उड़ान भर सका और ना ही उतर सका। राहत की बात यह रही कि आज फिर से विमान सेवा शुरू कर दी गई है। पठान ने 5 दिन में 500 करोड़ की कमाई कर डाली है, जिसको लेकर शाहरुख ने मीडिया के सामने आकर कहा कि फिल्म को इतनी मोहब्बत देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। साथ ही अभिनेता ने कहा कि दीपिका अमर, मैं अकबर और जॉन एंथनी हैं। पाकिस्तान के पेशावर में एक मस्जिद में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, करीब 150 लोग घायल हो गए। आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में हुए रूसी मिसाइल हमले में एक महिला की मौत हो गई, 3 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों में 81 साल के एक बुजुर्ग भी शामिल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हमले में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया। ईरान की राजधानी तेहरान में शुक्रवार को एक बंदूकधारी ने अजरबैजान के दूतावास में फायरिंग की थी, जिसमें दूतावास के सुरक्षा प्रमुख की मौत हुई थी। अजरबैजान में हमले के बाद अपने दूतावास को फिलहाल बंद कर दिया है। स्पेन के एक प्रवासी शिविर में सोमवार को जबरदस्त आग लग गई। यहां से करीब 200 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। स्थानीय प्रशासन ने इस शिविर को गिराने के आदेश दिए थे, लेकिन कार्रवाई से पहले यहां हादसा हो गया। आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। थोड़ी देर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे 2023 पेश कर दिया। इसमें साल 2023-24 में 6.5% विकास का अनुमान जताया गया है। मौजूदा वित्त वर्ष में ये 7% है। 2021-22 में विकास दर 8.7% थी। सर्वे के मुताबिक कोरोना महामारी में हुए नुकसान से अर्थव्यवस्था उबर गई है। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। आज अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के लिए अगले 25 साल बहुत महत्वपूर्ण है। ये अब विकसित होने की राह पर बढ़ रहा है। ये सरकार स्थिर, निडर और निर्णय लेने वाली सरकार है। बलात्कार के एक और मामले में आसाराम दोषी करार। गुजरात की गांधीनगर कोर्ट का फैसला, आज होगा सजा का ऐलान। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने वाला अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स डिजिटल एसोसिएशन ने समाचार चैनलों को दी चेतावनी। हेट स्पीच की गाइडलाइन पर अमल के मामले में वो कर रहा है करीबी निगरानी। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई में अनुसूचित जाति के लोगों को जिला प्रशासन ने दिलाया मंदिर में प्रवेश। आजादी के 75 साल बाद ये हो पाया। अब से पहले नहीं थी प्रवेश की इजाजत।